everyone, welcome to the new video with a new chapter, Punctuation and Capital Letters. So let's start the chapter. Chapter 15, Punctuation and Capital Letters. Punctuation marks are symbols that are used in sentences to make the meaning clear. So punctuation को हम यूज करते हैं, सिंबल्स होते हैं पंचुएशन वाले जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ताकि आपका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए. यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, हम कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ करते हैं? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. तो एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. सुमित इज रीडिंग अ बुक. एवरी लाइन ऑफ द पोम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हर एक लाइन जो है पोम की वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. सो जब भी हम कोई पोम की लाइन स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर. व्हेन राइटिंग प्रॉपर नाउन्स, जब हम प्रॉपर नाउन्स लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. इंडिया, रामा, द इंग्लिश, द रेड फोर्ट. Nouns and pronouns used for God begin with a capital letter. Nouns और pronouns जो होते हैं, जो हम use करते हैं for God, that also begins with the capital letter. Like God loves his children. Single letter I is always written in capital. और I आपका sentence में कहीं पर भी आता है तो we always use it with a capital letter. It is I who did this. Now use of punctuation marks. Full stop का use हम कहाँ करते हैं? At the end of every sentence हम full stop लगाते हैं. I was late for school. Do you work? When using abbreviations like MA, doctor, MLA, etc. Comma, to separate words and phrases को separate करने के लिए. He was an intelligent, polite and honest man. To separate no और yes from the rest of the sentence से अगर हमें separate करना होता है no और yes को तो तब हम use करते हैं. No, I can't do it. Yes, I can do it. To separate the addressee. Girls, move fast. Aman, come here. Question mark. After every direct question के बाद, do you know him? Where do you live? Now it's time to answer. Use punctuation marks at appropriate places and rewrite sentences. Do you know my name? So do you know my name? Question mark. He is going to the park. He is going to the park. Full stop. Why are you shouting? So why are you shouting? Question mark. Ramesh, read out the headlines. Ramesh, read out the headlines. Full stop. So like this, you have to read the sentences properly. Then you have to put the punctuation marks wherever it is required. So I hope you all have understood the chapter. Go through it again, do the exercises. We'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.